Hello my YouTube viewers. In this video we will learn about the frequency response in a system. First of all, we should know what is the frequency response analysis. Frequency response is the steady state output of a system to the sinusoidal input. Basically, we are applying the sinusoidal input at the input side of any system. Here we are considering the LTI system and we getting the output. So the sinusoidal signal would be a cos signal और a साइन सिग्नल. अब हम साइनोसाइडल इनपुट हम अप्लाई करते हैं कोई भी एलटीआई सिस्टम को, और जो है ये कॉस सिग्नल भी हो सकता है और साइन सिग्नल भी हो सकता है. तो मैंने इस केस में साइन सिग्नल को कंसीडर किया है, जो कि है हमारा ए साइन ओमेगा टी. यूजुअली हम इनपुट को आर ऑफ टी से डिनोट करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे आर ऑफ टी लिया है. और यहाँ पे मैंने कोई भी सिस्टम लिया है, वो है हमारा यहाँ पे बेसिकली एल टी आई सिस्टम, जिसका ट्रांसफर फंक्शन है जी ऑफ एस. तो इसका कुछ ना कुछ आउटपुट होगा, जाहिर सी बात है हमारे सिस्टम का. तो जो है वो क्या होगा, हमारा ए डैश साइन ओमेगा टी प्लस फाइव. और इसको आउटपुट को हम यूजुअली डिनोट करते हैं सी ऑफ टी से. The transfer function of LTI system is g of s, as I told you, in frequency domain, and the input, as I told you, we are representing r of t, and which is equal to a sine omega t, and the output denoted by the c of t, and which is equal to a sine omega t plus phi. Now the question is arise, what is the a dash? Basically a dash is changing, we are getting change due to the in the सिस्टम रेस्पॉन्स. जो हमने एल टी आई सिस्टम लिया है, बेसिकली उसके मैग्नीट्यूड में कुछ चेंज आया है, जिसकी वजह से हमने यहाँ पे जो है ए डैश लिया है. और इसके मैग्नीट्यूड के साथ जो ये हमारा फाई है, ये हमें बेसिकली बता रहा है कि जो है फेस में हमारे कितना चेंज आया है. तो हम जो है हमारे फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स में हमें यही पता चलता है कि हमारे फेस में और हमारे एम्पलीट्यूड में कितना चेंज आया है हमारे आउटपुट साइड पे. So for the response place, we are taking the s equal to j omega. So the j omega is equal to g into j omega, which is equal to g into omega magnitude. This is the our magnitude, which is greater than g into j into omega. This is our amplitude and this is our phase basically. Now this is our amplitude and this is a phase. So g of t becomes, it is the product of r of t into g into j into omega. So हमारा r of t हमने पहले ही बताया कि हमने इनपुट साइड पे जो सिग्नल लिया है वो हमारा इक्वल है a साइन ओमेगा टी के, ठीक है. और जो हमारा g इंटू जे इंटू ओमेगा जो है वो हमारा इक्वल है इसके. तो हम सिंपली इनकी वैल्यूज़ को लिख देंगे. तो मैंने हम आर ऑफ टी की जगह ए साइन ओमेगा टी लिखा और इसकी वैल्यू को लिख दिया है. अब क्या होगा, सिंपली इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा ए मैग्नीट्यूड ऑफ जी इंटू जे इंटू ओमेगा का मैग्नीट्यूड. ये रहा हमारा प्रोडक्ट में आ जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस ग्रेटर दैन जी इंटू जे इंटू ओमेगा. दिस इज अवर फेस बेसिकली. ये अब हमारा क्या है, फेस हो गया. और ये हमारा एम्पलीट्यूड में जो चेंज आया है ए डैश को ये रिप्रेजेंट करा है. तो जब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर जाएंगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ए डैश साइन ओमेगा इंटू टी प्लस फाइव. So basically we are usually use these methods to analyze the frequency response. These are the four methods we are using to analyze the frequency response. Now the bandwidth of the second order system in the frequency response analysis. First of all, we should know what is the bandwidth basically. The bandwidth is the change of the frequency over which the magnitude m of the frequency response is greater than and equal to 1 upon radical 2. अब हम जो है सेकेंड बैंडविड्थ को डिस्कस कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स की, क्योंकि
ये जो है फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स डिफरेंट पैरामीटर्स पे इफेक्ट करता है। तो अब मैं जो डिस्कस करने चाह रही हूँ वो है सेकंड ऑर्डर बैंडविड्थ। तो इसमें क्या है कि हमारा बैंडविड्थ क्या है कि हमारी जो है चेंज करता है फ्रीक्वेंसी ओवर मैग्नीट्यूड। ठीक है, मैग्नीट्यूड को हम यहाँ एम से लेंगे, पर उसकी फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स जो है वो ऑलवेज या इक्वल होनी चाहिए हमारे 1/2। और अगर इसी 1 इस रिस्पॉन्स को हम परसेंटेज में लेंगे तो वो हमारे इक्वल हो जाएगा 70.7%। और अगर हम इसको इसी को लेंगे, इसके रेस्पॉन्स को, वो हो जाएगा हमारा 3 dB इन डेसिमल फ्रॉम 0 initial value. Now the magnitude, we are finding the formula and satisfy how to get the formula of magnitude of the second order transfer function of frequency response. Okay, so our magnitude m is equal to 1 upon radical 1 minus x square into whole square plus 2 zeta. This is our zeta, which is our damping constant basically, and which is multiplied by the x, and this is our the normalized frequency, and we are taking the whole square. So now our x is a normalized frequency which is equal to omega 1 upon omega n. Now for the bandwidth, we are taking the condition as n is greater than 1 upon radical 2. So here I am taking the 1 upon radical 2 equal to this equation. So 1 upon radical 1 minus x square into the whole square plus 2 zeta x into whole square. Now we can simplify furthermore it. So we getting it 2 equal to 1 minus x square into whole square plus 2 zeta x square. Now I'm simply square it. So I'm getting then 1 minus 2 into x square plus 4 square. Then 2 simply that I also squared that, then I'm getting 4 zeta x square into x square. Now further simplify that equation, so x square plus 4 zeta minus 2 x square, here x square term and also here the x square term, so I'm taking the common here. So for zeta minus 2 is outer, we are taking the x square because here I'm taking the common. So here minus 1 because it's changed its side. Now it considered as a, it considered as a b, and it considered as a c. Now we are applying the quadratic equation on it to further simplify it. So x square equal to minus a. We also you very well know about the quadratic equation. So simply here I am putting the equal values of these. Now the x square equal to minus b is our for zeta minus 2 plus minus, and b is for zeta minus 2 whole square minus 4, a over is 1 and c is also a 1, and 2 into 1 because our a is here 1. Now further we are simplifying it, so we getting x square equal to 1 minus 2 zeta square plus minus 2 radical 2 zeta square minus 1 into whole square plus 1. Now the x only we are consider here the word plus minus, but in this case I'm taking the positive sign. So the x square equals to 1 minus 2 into zeta square plus radical 4 zeta 4 minus 4 zeta square plus 2. Now our x becomes radical 1 minus 2 zeta square plus radical 4 zeta 4 minus 4 zeta 4 plus 2. Now here, as I told you, I am taking the x equal to omega upon n and considering this case basically, which is m is also greater than 1 upon radical 2. So I'm putting the omega b upon omega n at the side of the x, which is equals to now radical 1 minus 2 zeta square plus radical 4 zeta 4 minus 4 zeta 4 plus 2. Now this n become multiply with this because it is in denominator. So the omega b equal to omega n radical minus 2 zeta 2 radical plus radical 4 zeta 4 minus zeta 4 plus 1. This is our the basically
actual formula of the bandwidth of the second order system in the frequency response. Now here I'm taking the example to define furthermore it the frequency response. Basically there is our amplitude which is from the which is 1, and at the falling edge it is the range of 0.70, and this is about the range of from 0 to omega w, which is our bandwidth. This is our initial condition basically, and it is at the amplitude is the maximum amplitude is 1. So thank you so much for listening me. Here I'm ending my this lecture.